Hello students, sum number 10. First of all, we discuss the all entries. Sales we know very well. In profit and loss account, statement of profit and loss of Path Limited for the year ending on 31st March 17. Statement of profit and loss of Path Limited for the year ending on 31st March 17. Particular amount rupees. Balance sheet of Path Limited as on 31st March 17. Particular amount rupees. Now I'll discuss all the entries. First one is a sales. We know very well it's in a profit and loss account under the head, or we can say it's a revenue from operations. Employees benefit expense also recorded in profit and loss account. Purchase, change in stock, and employees benefit expense. Next, inventories in a balance sheet under the current assets. Non-current assets, current assets and inventories. Then finance cost is recorded at profit and loss account. Finance cost is recorded in profit and loss account. Next, security premium is recorded under the reserve and surplus. Security premium is recorded under the reserve and surplus. Next, fixed assets tangible. So under the head of non-current assets in balance sheet, trade payables liability side, it means in balance sheet under the main head liability, and the subhead is current liability and trade payables. Equity share capital, equity liability, shareholders fund and share capital. Trade receivables also in balance sheet asset side, current assets or trade receivables. Other income, profit and loss account, long-term borrowings, non-current liabilities and long-term borrowings. Cash and bank balance, it's recorded asset side under the head of current assets, cash and cash equivalent. Then depreciation, profit and loss account में depreciation and amortizations, cost of goods sold, purchase under the head purchase में, and non-current investment balance sheet में asset side. From the above information, prepared the final account of company for the year ended on 31st March 17 as per Schedule 3 of Companies Act 2013. Notes to the accounts are not required. So स्टार्ट करते वन बाय वन, सिर्फ एंट्री करनी है हमें. तो फॉर्मेट मीन्स नॉर्मली लिख लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम
operations, it means sales. Other income, total income, then expense, purchase, change in stock, direct expense, employees benefit, finance cost, depreciation and amortization, other expenses, total expense, देन प्रॉफिट. बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे जितनी एंट्री है वही, सिर्फ तो इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. आई थिंक लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटीज है नहीं, सो जितनी जितनी एंट्री है वही रिकॉर्ड करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले सेल्स, तो दैट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द सेल्स. द अमाउंट ऑफ सेल्स इज 11,25,000. In employees benefit expense 1,95,000. Employees benefit expense 1,95,000. Inventories, करंट असेट्स में, इन्वेंटरीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज में तो कोई एंट्री आई थिंक नहीं है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म, यस. ट्रेड पेएबल्स, सिर्फ ट्रेड पेएबल्स आने वाले हैं और कोई लायबिलिटी आई थिंक है नहीं, तो 2 एंट्री रख देते, ज़्यादा नहीं. अब नेक्स्ट असेट्स. असेट्स में फिक्स असेट्स टेंजिबल है, फिक्स्ड असेट्स और वो भी टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स नहीं है. नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है,
देन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज आई थिंक नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। चलो नेक्स्ट, अदर नॉन करंट असेट्स, इट मीन्स एनी कोई फिक्टिशियस असेट्स इज नॉट रिटर्न ऑफ, सो इट्स ऑल्सो नॉट। नाउ नॉन करंट असेट्स के हेड में आई थिंक ये दो एंट्री है, फिर भी 1 और 2 लाइन्स रखेंगे। करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंटरीज आई थिंक डेटर्स और बिल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, देन ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आई थिंक कैश एंड बैंक बैलेंस थी ना, यस, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन अदर असेट्स, और वो सब 1 बाय 1 चेक करते हैं। नाउ इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज है 1,65,000, इन्वेंटरीज 1,65,000। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनेंस कॉस्ट है 26,250, 26,250। देन सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000। नेक्स्ट फिक्स असेट्स टेंजिबल 12 लाख, तो फिक्स असेट्स टेंजिबल 12 लाख। ट्रेड पेएबल्स 90,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। तो ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटी में सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ट्रेड पेएबल्स 90,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। ट्रेड रिसीवेबल 60,000, असेट्स ट्रेड रिसीवेबल 60,000। अदर इनकम 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम 30,000। Then long term borrowings 5,25,000, long term borrowings 5,25,000। Then cash and bank balance, cash and cash equivalent, cash and bank balance 90,000 is recorded under the cash and cash equivalent। Depreciation 33,750, depreciation and amortization 33,750। cost of goods sold परचेज में COGS, cost of goods sold 6 lakh। non current investment non current assets, fixed assets tangible, non current investment 2,10,000। नाउ अब मीन सिर्फ टोटल करना है हमें।
So the total income is 11,55,000 and the expense, total expense to 6 lakh plus 195 plus 26,250 plus 33,750. So the total expense is 8,55,000. Total expense is 8,55,000. So 11,55,000 minus 8, तो 3 lakh rupees. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कोई प्रोविज़न का एडजस्टमेंट नहीं है, टैक्स प्रोविज़न, सो विल नॉट मेक एनी प्रोविज़न एंड द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस. प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस 3 lakh rupees. So the total equity and liability 7 plus 3 10 or 11,10,000 and non-current liability is 5,25,000 and current liability is 90,000. So the total of equity and liability 17,25,000. 10 plus 91 lakh, 11 plus 5 16 or 17,25,000. Now asset side 12 lakh plus 2 lakh 10,000, 1 lakh 65,000, 60,000 90,000. तो 2 10 plus 19 3, तो 12 plus 3 15, 16 और 17,25,000. So the total asset side also 17,25,000. दैट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. एक्सरसाइज के आई थिंक हमने सभी सम सॉल्व किए हैं, किसी भी सम को स्किप नहीं किया है, तो तुम्हें हेल्पफुल हो. एंड जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सब प्रैक्टिस करनी है. फिर भी कोई डाउट हो तो मीन्स आप कभी भी मीन्स यानी कॉल कर सकते हो, मैसेज से कभी भी कोई भी क्वेरी हो तो मीन्स वो सॉल्व कर सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच.